Hello everyone and welcome to Vidya Mandir classes. I'm Sanjana Jain and I'm your botany faculty. So in the last class we dealt with the chapter Morphology of Flowering Plants में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्लावर का फर्स्ट पार्ट, फ्लावर के कैलिक्स, फ्लावर के कोरोला के बारे में डिस्कस किया था. सेपल्स और पेटल्स फ्लावर के नॉन एसेंशियल वॉल्स होते हैं because they do not participate in reproduction. हम लोगों ने एस्टिमेशन के बारे में डिस्कस किया था. फ्लावर की सिमेट्री, ओवरी की पोजीशन के बेसिस पे फ्लावर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ फ्लावर को हमने डिस्कस किया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंडरोशियम एंड गाइनोशियम which are the important whorls of the flower because they participate in the reproduction directly. So let's start with our class today. Okay, so let's start with the Androecium and Gynoecium today. They are the very important topics which are involving a lot of new terms. So stay connected and stay focused with by making your notes regularly, time by time. Just stay connected. Okay, first of all, write down the name of the chapter, that is Morphology of Flowering Plants. Write down. Now see, I'll just draw a flower. Just a second. These are the male reproductive parts. This is anther. This is filament. It is together called as a stamen. A group of stamens is called as androecium. This is stigma. This one is style. This one is ovary. It is called as carpel, and group of carpels is called as gynoecium. Now, both these whorls, which includes gynoecium and androecium, both these whorls are essential whorls. They are essential whorls. Why are they essential? Because they participate, because they have a role in a reproduction. So they are called as essential whorls. So they are
essential walls. Just a second. Okay, so we were discussing why calyx and corolla are non-essential walls and androecium and gynoecium are essential walls. Essential walls वो इसलिए है because they take part in reproduction or directly. Okay, now we are going to discuss about the essential walls in detail. Now we are going to discuss about the essential walls in detail. Put down the heading androecium. Put down the heading androecium. It is the third wall of the flower. Write down. It is the third wall of the flower. Third wall of the flower. Androecium is the male or reproductive part of the flower. Or write this down. It's the male or reproductive part of the flower. It is group of stamens. Now, let's draw the structure of stamen. Let's draw the structure of stamen. These are the anthers. This is the filament. Filament. This is the anther. Anthers are connected to each other by a tissue called as connective. Tissue connects the anther. Now, if you cut the TS of this anther, TS means just like a cucumber. Cucumber को अगर आप ऐसे कट कर रहे हो तो जो सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है that is TS, transverse section. तो अगर आप transverse section कट करते हो anther का तो वो कैसा दिखता है? Let's draw it. So let's draw it. It appears like this. इस तरह से दिखेगा. अंदर उसके 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. This is one lobe. This is second lobe. तो 2 lobes हैं, 2 sides हैं. तो इसको बोलते हैं हम बायलोब. ठीक है. This is one chamber or theca. चैम्बर और थीका. तो एक लोब में 2 थीका हैं और टोटल अगर आंसर में देखो तो 4 थीका हैं. सो वी कॉल इट एज टेट्राथीकस और डाइथीकस इन वन लोब. ठीक है. देन दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया. 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं तो इट इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट. तो मतलब टिपिकल एंथर जो है वो टेट्रास्पोरेंजिएट होगा, टेट्राथीकस होगा और बायलोब्ड होगा. ठीक है. नाउ
स्टेराइल एंथर को, स्टेराइल स्टेमन या स्टेराइल एंथर is called as staminode. Note this down. Sterile stamen is called as staminode. Note this down. एंथर की जो शेप्स होती हैं फ्लावर के अंदर वो वैरी करती हैं. Let me explain you a few terms. See here. This is the dorsal view of anther and this is the ventral view. यहाँ पे कनेक्टिव शो किया हुआ है, वो टिश्यू होता है, स्टेराइल टिश्यू होता है जो दो एंथर के लोब्स को कनेक्ट करता है. ठीक है. देन एंथर में जो नीचे स्टॉक है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट और टुगेदर इट इज कॉल्ड एज स्टेमन. ठीक है. यहाँ देखो एंथर किस तरह से अटैच्ड है फिलामेंट के साथ. उस अटैचमेंट के बेसिस पे डिफरेंट तरह के टाइप्स हैं. वन इज एडनेट, अदरवाइज अगर बेस पे अटैच्ड है तो बेसिफिक्स, अगर डॉर्सल साइड पे अटैच्ड है तो डॉर्सिफिक्स और अगर वेंट्रल साइड पे अटैच्ड है तो वर्सिटाइल. वर्सिटाइल में बेसिकली क्या होता है, सपोज दिस इज द फिलामेंट और ये एंथर्स है तो आराम से चारों डायरेक्शन में अगर मूव कर पा रहा है तो उसको हम बोलते हैं वर्सिटाइल एंथर्स. ठीक है, या वर्सिटाइल स्टेमन. यहाँ पे जो डायग्राम है ये डायग्राम है स्टेमन का, जिसमें आपको दिख रहा है ये येलो कलर के एंथर्स हैं और ये व्हाइट कलर का फिलामेंट है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ जो स्टेमन होता है उसमें फिलामेंट की जो लेंथ है वो एक फ्लावर के अंदर वैरी भी कर सकती है और सेम भी हो सकती है. वो वैरी करती है तो उसको हम देखो क्या बोलते हैं, there can be a variation, there can be a variation in length of filaments within a flower. दो कंडीशन होती हैं, एक है टेट्राडायनामस, एक है डाइडायनामस. टेट्राडायनामस में क्या होता है, रुको मैं बताती हूँ जरा. अंदर वाले 4 स्टेमन्स का फिलामेंट जो है वो लॉन्ग होता है और बाहर वाले 2 का शॉर्ट होता है. तो अंदर के 4 का लॉन्ग है तो टेट्राडायनामस और यहाँ पर डाइडायनामस कंडीशन में 2 अंदर वालों का लेंथ जो है फिलामेंट का वो लॉन्ग है और 2 बाहर वालों का शॉर्ट है. सो यू कैन राइट डाउन 4 inner long, 2 outer short. और यहाँ पर 2 inner long and 2 outer short. ये जो पहली वाली कंडीशन है ये आपको देखने को मिलती है मस्टर्ड ब्रासिकेसी फैमिली. ठीक है, और जो दूसरी वाली कंडीशन है वो देखने को मिलती है साल्विया या ऑसिमम. ये हो गया लेमिएसी फैमिली, लेमिएसी फैमिली. ठीक है, तुलसी तुलसी
ऑसिमम इज तुलसी, ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो इसको. Then I'll show you the diagram. Okay, now I'll show you the diagrams of the same. See यहाँ पर, यहाँ देखो, डायडायनामस कंडीशन में 2 अंदर वाले लॉन्ग हैं और 2 शॉर्ट हैं, ठीक है, और टेट्राडायनामस कंडीशन में 4 अंदर वाले लॉन्ग हैं और 2 आउटर वाले शॉर्ट हैं. The Diadynamous condition is seen in Lamiaceae family and Tetradynamous in Brassica, Mustard in Brassicaceae family. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. Now सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोहेशन. कोहेशन क्या होता है? अगर different stamens associate with each other, इसको हम बोलते हैं कोहेशन. जैसे कि अलग अलग कंडीशंस होती हैं, मोनो अडल्फस, डाई अडल्फस. पहले मैं टर्म्स लिख रही हूं, then I'll explain you those terms. Polyadelphous, then we have syngenesious. अब इन टर्म्स के मतलब देखो होते क्या है. जब अडल्फस टर्म हम बोल रहे हैं तो एडल्फस टर्म, जब हम एडल्फस टर्म बोल रहे हैं तो एडल्फस टर्म में क्या होता है, जो आपके एंथर्स हैं वो फ्री हैं और फिलामेंट्स फ्यूज हैं. एंथर्स फ्री हैं और फिलामेंट्स फ्यूज हैं. अगर वो फ्यूज है एक ही बंडल में तो उसको हम बोलते हैं मोनो एडल्फस. यू कैन राइट डाउन, if they are fused in one bundle it is monoadelphous. If they are fused, if they are fused in 2 different bundles, fused in 2 different bundles it is diadelphous. अगर ज्यादा bundles में fused हैं, ज्यादा बंडल्स में फ्यूज है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीअडल्फस. तो अडल्फस कंडीशन. सिनजेनेशियस में क्या होते हैं? So you can write down, in these conditions anthers are free and filaments are fused. Syngenesious condition में क्या होता है? उल्टा होता है. Anthers fused होते हैं and filaments are free. मतलब ये anthers है, ये fused है. Anthers जो हैं वो fused हैं और filaments जो हैं वो free हैं. This is syngenesious condition. Then you have the another condition like polyandrous and synandrous. Synandrous condition में क्या होते हैं? Both anthers and filaments are fused.
और synandrous कंडीशन में, polyandrous कंडीशन में क्या होता है? Anther and filament both are free. Both are free. Now let's draw the diagrams of the same. यहाँ पर anthers और filaments free हैं. ये हो गई आपकी polyandrous condition. Synandrous में क्या है? Anthers और filament दोनों fused हैं. ठीक है, समझ आ गया? चलिए अब इनके बारे में लिखते हैं. Now let's write about all these. Write down. पहले लिखो monoadelphous condition. Monoadelphous में लिखो fuse to form one bundle. Fuse to form one bundle. Example, China rose. ठीक है. Diadelphous में fuse to form two bundles. Example, pea beans. Polyadelphous में लिख लो fuse to form many bundles. Example, citrus. Many bundles का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? More than two. ठीक है. So this was about the conditions जब stamens आपस में या तो fused है या free है, associated है आपस में. इसको हम बोलते हैं cohesion. अब आपको मैं images दिखाती हूँ. So यहाँ देखिए images इनकी. You'll get a better idea of the same. यहाँ देखो मोनोअडेल्फस में सब फ्यूज होके एक बंडल बन रहा है. डाई में दो बंडल्स बन रहे हैं. ठीक है. पॉलीअडेल्फस में मल्टीपल बंडल्स बन रहे हैं. सिंजेनेशियस में एंथर्स फ्यूज हैं, फिलामेंट्स फ्री हैं. या सिनेंड्रस में दोनों के दोनों फ्यूज हैं. ठीक है. यहाँ देख लो सिंजेनेशियस कंडीशन. मोनोअडेल्फस में एक ही बंडल बन रहा है. पॉलीअडेल्फस में ये तीन बंडल्स दिख रहे हैं आपको. डायअडेल्फस में दो बंडल्स दिख रहे हैं. ठीक है. क्लियर हो रहा है आपको इमेजेस से? चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज अडेशन. Adhesion of stamens. अब adhesion का मतलब क्या होता है? Adhesion का मतलब है कि stamen flower के किसी और wall के साथ associated है. Write this down. Stamen is associated with other wall of the flower. Other wall of the flower. For example, अगर वो associated है petals के साथ तो उसको हम बोलते हैं एपीपेटलस. अगर वो एसोसिएटेड है सेपल्स के साथ तो उसको हम बोलते हैं एपीसेपलस. और अगर वो एसोसिएटेड है टेपल्स के साथ. What are tepals? Tepals are those parts of the wall when the calyx and corolla are not distinct.
कैलिक्स और कॉरेला, मतलब सेपल्स और पेटल्स डिस्टिंक्ट नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं टेपल्स. Associated with tepals, so it is called as epitepalous or epiphyllous. इनके एग्जाम्पल्स लिख लो और write down the examples. Example of epipetalous is brinjal, China rose. Brinjal belongs to a Solanaceae family. ठीक है. Epicephalus का एग्जाम्पल्स है verbena. Okay, and epiphyllus का एग्जाम्पल है lily, which belongs to Liliaceae family. Note this down. Note this down. Note this down. Then I'll show you the figures. तो इस फिगर में आपको दिख रहा है ये जो स्टेमन्स हैं ये पेटल्स के साथ फ्यूज्ड हैं. तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? एपीपेटलस कंडीशन. नोट दिस डाउन. नोट दिस डाउन. एक और इमेज मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ देखिए ये जो स्टेमन्स हैं ये कॉरेला के साथ फ्यूज्ड हैं, तो ये हो गई एपीपेटलस कंडीशन. और यहाँ पर जो स्टेमन्स हैं वो पेरियन, पेरियन मतलब ग्रुप ऑफ सेपल्स, उसके साथ फ्यूज्ड हैं. तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? एपीफाइलस और एपीटेपलस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट दैट इज गाइनोशियम के बारे में डिस्कस करते हैं. गाइनोशियम के बारे में. गाइनोशियम हो गया फ्लावर का फोर्थ वर्ल्ड और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और वो इनरमोस्ट वर्ल्ड है फ्लावर का. राइट इट डाउन or write it down. Note this down. Gynoecium is the fourth whorl of the flower. Or write this down. It is the fourth whorl of the flower. Write down. It is the fourth whorl of the flower. It is the female or reproductive system or organ of flower. ग्रुप ऑफ कार्पल्स को बोलते हैं हम गाइनोशियम. गाइनोशियम का जो स्ट्रक्चर बना लेते हैं. This is a stigma. This is a style. This is ovary. ये जो ओवरी है इस ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स और प्लेसेंटा. ये जो ये वाला पार्ट है ना ये दिस इज ओव्यूल. दिस वन इज प्लेसेंटा. और ओव्यूल और प्लेसेंटा
को जो कनेक्ट करते हैं, that is funicle. Stalk of the ovule. This is ovule, and this one is placenta. ठीक है. Now, ओव्यूल को अगर आप टीएस में काटते हो तो काटने के बाद ओवरी को अगर आप टीएस में काटते हो तो ओवरी किस तरह की है मैं आपको बताती हूँ. उसके अंदर के चैम्बर को हम बोलते हैं लॉक्यूल. तो वो चैम्बर उसके पास कितने हैं? 1 है, 2 है, 3, 4 या 5. उसके बेसिस पे हम उसको बोलते हैं यूनिलॉक्यूलर, बायलॉक्यूलर, ट्राइलॉक्यूलर, टेट्रालॉक्यूलर या पेंटालॉक्यूलर. देख लीजिए. Write it down. Write it down. On the basis of chambers or locules of ovary, there are 5 types. There are 5 types. I'll just show you the types. Let me attach the figures first, then I'll show you the types. This one is having 4 locules, so it is tetralocular. This one is having 5 locules, so it is pentalocular. और write it down. यहाँ देखो एक ही locule है, एक ही chamber है, कोई partition नहीं है, तो ये कौन सी हो गई? Unilocular. और write it down. Or write it down. This is unilocular. Has 1 chamber or locule. ठीक है? Then this one is bilocular, having 2 chambers or locules. Have 2 chambers or locules. Then this one is trilocular. Trilocular, इसके पास 3 chambers हैं or locules. Have 3 chambers or locules. This one is tetralocular. इसके पास 4 chambers हैं. ठीक है? Have 4 chambers or locules. This one is pentalocular. Have 5 locules or chambers. तो 5 कैसे हो गए? ये देखो 1, 2, 3, 4 और 5. तो ये हो गया pentalocular. Note this down. Note this down. Draw the diagrams and note this down. ये जो बीच में आ रही है यहाँ पे ये प्लेसेंटा है. This is placenta. अब ये प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल्स कैसे अरेंज्ड हैं, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन. Before going into detail of placentation, I just want to tell you about stigma, style and ovary. First, I'm going to tell you about stigma, style and ovary.
Write down. This part is a stigma. This one is a style, and this one is ovary. Write it down. Write it down. पहले लिखो स्टिग्मा के बारे में. It is the part, or it is the receptive part, receptive organ for pollen grains. तो यहाँ पर pollen grains आके लैंड करते हैं. ठीक है. स्टाइल एक स्टॉक है जो कनेक्ट करती है स्टिग्मा और ओवरी को. Write it down. It's a tube-like structure. Tube-like structure that connects stigma with ovary. और जो ovary है, it is the basal swollen part of carpel that bears ovules, जिसके अंदर ovules होते हैं. Ovules are attached to a cushion-like tissue which provide nutrition called as placenta. The tissue is called as placenta. So लिख लो इस बात को. Ovules are attached to cushion-like structure called placenta. प्लेसेंटा तुम्हें याद है, मैंने अभी बताया भी था. दिस इज प्लेसेंटा. दीज आर ओव्यूल्स, एंड ओव्यूल्स और प्लेसेंटा को कनेक्ट करता है फ्यूनिकल. फ्यूनिकल इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल. ठीक है. चलिए, अब प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल्स कैसे अरेंज्ड हैं, उस बेसिस पे हमें अरेंजमेंट दी है. उस अरेंजमेंट को बोला है हमने प्लासेंटेशन. सो राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज प्लासेंटेशन. Next heading, that is placentation. Placentation is arrangement of ovules on placenta within ovary. ओवरी के अंदर प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल्स कैसे अरेंज्ड हैं, इसी को हम बोलते हैं प्लासेंटेशन. प्लासेंटेशन आपकी 5 तरह की होती हैं. एक होती है मार्जिनल प्लासेंटेशन, एक होती है एक्साइल्ड प्लासेंटेशन, पैराइटल प्लासेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन और बेसल प्लासेंटेशन. Now we are going to discuss about each placentation in detail. Let's write down about first लिख लो marginal placentation. Marginal placentation. लिख लो. फर्स्ट पॉइंट, ये जो प्लेसेंटा है ना, ये रिज फॉर्म करती है और ऑल दी ओव्यूल्स लाई ऑन इट्स मार्जिन. तो लिख लो इस बात को. द प्लेसेंटा forms in this forms a ridge along the ventral suture. वेंट्रल साइड पर प्लेसेंटा एक रिज फॉर्म करता है
and ovules are born. And ovules are born in two alternate rows along the ridge. जैसे कि अगर ये प्लेसेंटा है तो यहाँ पर ऐसे ओव्यूल्स बॉर्न हो रहे हैं. बेसिकली ओव्यूल्स ही जाकर सीड्स बनते हैं और सीड्स ही जाकर क्या बनते हैं, और ओवरी जाके क्या बनती है, ओवरी जाके बनती है फ्रूट. तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो. ये देखो, ये हो गई प्लेसेंटा, ये वाली, और ये हो गई प्लेसेंटा. प्लेसेंटा में है ओव्यूल्स, दो रोज में है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल है इसका पी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. एक्साइल्ड प्लेसेंटेशन. नेक्स्ट इज एक्साइल्ड प्लेसेंटेशन. Exiled placentation. Exiled placentation में क्या होता है, लिख लो. Placenta is present in the axial position, बीच में होगी. Placenta axial position में होगी. Okay, write down the placenta is present in the axial position and the ovules are attached to it in axial position. ठीक है, नेक्स्ट बात लिखो. द ओव्यूल्स आर, जो ओवरी है, ओवरी जो है वो मल्टीलॉक्यूलर है. मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ तुम्हें. यहाँ पे देखो डायग्राम आपको दिख रहा है. यहाँ देखो, ये आपका हो गया एक्साइल प्लेसेंटेशन. इस तरह से ये प्लेसेंटेशन एक्साइल है और ओव्यूल्स यहाँ से निकल रहे हैं. ठीक है, एग्जाम्पल, और राइट डाउन द एग्जाम्पल. टोमेटो, टोमेटो, lemon, China rose. Next placentation is parietal placentation. Parietal placentation में जो ovules होते हैं वो periphery पर attached हो जाते हैं. Or write this down, or write this down. The ovary are, yeah, the ovules are born on central axis. यहाँ पर सेप्टा एब्सेंट होता है. सेप्टा मतलब पार्टीशन, पार्टीशन यहाँ पे एब्सेंट होता है. सेप्टा आर एब्सेंट इन दी ओवरी. जैसे अगर ये आपका ओव्यूल है और ये आपका ओवरी है, तो यहाँ पर इस तरह से
इस तरह से पेरिफेरी पे ओव्यूल्स अटैच्ड होंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो ये आप इसी वाले डायग्राम में देख सकते हो, जो ओव्यूल्स है वो पेरिफेरी से निकल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज पेराइटल प्लासेंटेशन। एग्जाम्पल लिख लो, मस्टर्ड, आर्जिमॉन, मस्टर्ड और आर्जिमॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन में क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी में बीच में फ्रीली अटैच्ड होते हैं। सो यू कैन राइट डाउन द ओव्यूल्स आर बोर्न on the central axis, बीच में होंगे, और यहां पर हमने फ्री सेंट्रल की पेराइटल प्लासेंटेशन की डेफिनेशन में गड़बड़ कर दी। रुको जरा, इसको लिखो यहाँ पे, ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन नॉट ऑन द सेंट्रल एक्सिस, इसको हम लिखते हैं ऑन पेरिफेरी, ऑन पेरिफेरी। ठीक है, सेप्टा एब्सेंट होता है, यूनिलॉक्यूलर हो गया मतलब। ठीक है, चलिए, यहाँ पर द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा इज एब्सेंट। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया डायंथस और प्रिमरोज, डायंथस और प्रिमरोज इस तरह से। ठीक है, अब डायग्राम दिखाती हूँ। ये आपका फ्री सेंट्रल है, ये जो ओव्यूल्स है यहाँ पर ये फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन है। फ्रीली सेंट्रल में ओव्यूल्स ऐसे यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्लासेंटेशन जो है दैट इज बेसल प्लासेंटेशन। बेसल प्लासेंटेशन, ये मोस्ट एडवांस्ड प्लासेंटेशन है। इट इज द मोस्ट advanced placentation, most advanced placentation। यहां पर जो प्लेसेंटा होती है develops at the base of the ovary, at the base of the ovary. It has single ovule attached to the placenta, single ovule attached to the placenta, इस तरह से। ये ओव्यूल हो गया और ये हो गई प्लेसेंटा। यहाँ देख लो, ये आपका हो गया बेसल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल। एक ही ओव्यूल अटैच्ड है बेस पर, दिस इज बेसल प्लासेंटेशन। बेसिकली ओव्यूल टर्न्स इनटू अ सीड एंड ओवरी टर्न्स इनटू अ फ्रूट। तो एग्जाम्पल लिख लो इसका, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, sunflower and marigold. So with this, we have completed our flower. We have discussed about androecium, gynoecium, calyx and corolla. कैसे flowers के whorls arranged हैं, placentation, aestivation, cohesion, adhesion of stamens, everything we have discussed. In the next class, we are going to discuss about flower. We are going to discuss about fruit and seed. Stay tuned. Bye-bye.